Welcome to the material session of Pulsar's Career Point. This is a video for the student of class 12 on Unit 2. The name of the unit is Electrochemistry. This is the part 4 video of this unit covering the topics problems on Faraday's laws of electrolysis. Last video रे आमे Faraday law रो statement और explanation कथा पढ़ी थिले. ए वीडियो रे आमे Faraday उपरे विगत वर्ष मानकर आसीथिबा प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा एवं वीडियो शेष मध्य तो मानक पई किछि प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सॉल्व्ड problems you must can solve the practice problem. Let us come for the first problem. Problem number 1. How many atoms of calcium will be deposited from fused calcium chloride by a current of 25 milliampere passed for 60 seconds? Question कहूची जे 25 मिलिएम्पियर इलेक्ट्रिसिटी को 60 सेकेंड पाई पास कला परे केते कैल्शियम एटम डिपोजिट हबो फ्रॉम फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड. आमको प्रथम नजर पकेबा पड़िबो आमको कौन कौन डाटा देइछि. इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव नॉलेज ऑन गिवन. हियर I is equal to 25 milliampere which must be converted to ampere, that is 0.025 ampere, and time t also given 60 seconds. Quantity of electricity Q is equal to IT. So quantity of electricity Q is equal to I into T, that is I is equal to 0.025 ampere into 60 seconds, that is equal to 1.5 कूलम. ताले बर्तमान आमे जानी गलु 1.5 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई छी. आमे जानी छु जे 1 मोल ऑफ एटम को प्रोड्यूस करिया पाई फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिक दरकार है. केते फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिक दरकार हबो ना जत्ते मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार हबो सते फैराडे. अर्थात एटी कोन हला ना कैल्शियम डिपॉजिट हला फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड. whenever calcium chloride in its dissociates form, it will give us Ca2 plus and 2Cl minus. Ca2 plus by gaining 2 electron at the cathode is reduced to calcium. So how many moles of electrons are utilized here? 2 moles of electron. So 2 Faradays of electricity is required for 1 mole of calcium atom. 2 Faraday means how many coulomb? 2 into 96,500 coulomb. अच्छा 2 into 96,500 coulomb produced 6.02 into 10 to the power 23 number of calcium atom. सी पचास number of calcium atom केते produce करिबो by passing 1.5 coulomb of electricity. कारण हमें ऑलरेडी कैलकुलेशन कर साचु क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केते पास कराई छी ना 1.5 coulomb, which is calculated from I and T. So number of calcium atom produced by 1.5 coulombs of electricity is 6.02 into 10 to the power 23 into 1.5 by 2 into 96,500, which is calculated to be 4.68 into 10 to the power 8 atoms. Thus आमको क्वेश्चन कौन पचारि थिला, how many atoms of calcium will be deposited from fused calcium chloride by a current of 25 milliampere passed for 60 seconds. So after solving the problems we have to write down. So 4.68 into 10 to the power 8 atoms of calcium will be deposited. Now एबे जिबा हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर 2. How many coulombs of electricity are required for the reduction of Al3 plus ions to aluminum? How Al3 plus is reduced to aluminum? Now by gaining 3 electrons.
So Al3 plus 3 electron gives us aluminum. 3 moles of electrons are required for the reduction. So I mean 1 mole of electron by 1 Faraday. So 3 Faradays of electricity is needed for 3 moles of electrons. Number of coulombs of electricity, 1 coulomb is equal to 96,500. So number of coulombs of electricity is equal to 3 into 96,500, that is equal to 2,89,500 coulombs. जेहेतु क्वेश्चन coulombs रे पचारि थिला तेनु आंसर टी coulombs रे ही रहइबो. So how many coulombs of electricity are required for the reduction of Al3 plus ions to aluminum? 2,89,500 coulombs of electricity are required for the reduction of Al3 plus ion to aluminum. Let us come for the next question, next problem, that is problem number 3. How many electrons are required for the oxidation of 1 mole of FeO to Fe2O3? 1 mole of iron oxide Fe2O3 को ऑक्सीडाइज हम केते इलेक्ट्रॉन दरकार हमको नजर पकड़ पड़ो ऑक्सीडाइज किए हम ना FeO क्योंटी को हम Fe2O3 को. So the electrodirection टी कौन ना the electrodirection is FeO means Fe2 plus O2 minus gives Fe2O3 means 2Fe3 plus O3 minus. ताले Fe2 plus कौन है हाफ ऑफ Fe3 plus को ऑक्सीडाइज हम. सो Fe2 plus गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो देखिए Fe3 plus को जीवो. सो 1 मोल ऑफ केते इलेक्ट्रॉन से ना 1 मोल. सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन that is 6.023 into 10 to the power 23 number of electrons are required for the above oxidation. आमे मध्य लिखि परिबा 1 mole जगह 6.023 जगह 6.02 मध्य लिखि परिबा. So how many electrons are required? Now 1 mole that is 6.02 into 10 to the power 23 number of electrons are required for the above oxidation. Now let us come for the next problem. Problem number 4. Find the mass of copper deposited from copper sulfate solution by a current of 0.25 ampere flowing for 1 hour. Given atomic mass of copper is 63. पिला माने हम डाटा कौन देला सी कहला 0.25 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक को पास करा गला 1 आवर पाई टाइम देइची आई देइची हमको W मागिची किंतु फारडे फर्स्ट लॉ आम जानी W इक्वल ZIT एटी हमको जेड देई नहीं किंतु एटॉमिक मास देइची. सो हमको एटॉमिक मास रु एटार इक्विवेलेंट मास काढे पड़िबो. कॉपर सल्फेट रे कॉपर रो वैलेंसी 2 तापर जेड काढे पड़िबो तापर जाई हमें W कैलकुलेशन करि पारे. लेट अस कम फॉर द सॉल्यूशन. Here I is equal to 0.25 ampere, T is equal to 1 hour, that is 3600 second, Q is equal to IT, that is 0.25 into 3600, that is equal to 900 coulombs. बर्तमान इक्विवेलेंट मास काढिबा एटॉमिक मास देइतला केते 63, वैलेंसी इन कॉपर सल्फेट is 2. So equivalent mass of copper is equal to 63 by 2, that is 31.5. Tale we know that 96,500 coulombs of electricity are required to produce 1 gram equivalent of the ions. अर्थात 31.5 ग्राम पाई हमको 1 फैराडे 6500 coulombs दरकार. So 96,500 coulombs of electricity is required to produce 31.5 gram of copper. Hence, the weight of copper deposited by the current of 900 coulombs is equal to 31.5 by 96,500 whole into 900. That is equal to 0.2937 gram. Hence, हमको क्वेश्चन कौन पचारि थिला? Find the mass of copper deposited. Here
0.2937 gram of copper deposited from copper sulfate solution by the current of 0.25 ampere flowing for 1 hour. Now let us come for the next problem, problem number 5. When an electric current was passed simultaneously through acidulated water and copper sulfate solution, weight of hydrogen and copper liberated are 0.0132 and 0.4164 gram respectively. Calculate the equivalent mass of copper given the equivalent mass of hydrogen is 1. Problem में हमको कौन कौन देला, weight of hydrogen और weight of copper देला, equivalent mass of hydrogen मध्य दे देला, equivalent mass of copper मांगेला. So before solving the problem we must have to give attention on the given data. WH देला 0.0132 ग्राम, WCU देला 0.4164 ग्राम, ECU EH मध्य देइछि. एबे कथा उठुछि आमे एठी कोनटा यूज करबा ना W1 W2 E1 E2 को नहीं फैराडे सेकेंड लॉ आसीबो. अप्लाइंग फैराडे सेकेंड लॉ WCU by WH is equal to ECU by EH. WCU डाटा पके दबा, WH ର वैल्यू पके दबा, WH ର वैल्यू पके दबा. So ECU is equal to 0.4164 by 0.0132, that is equal to 31.52. Hence the equivalent mass of copper is found to be 31.52 gram. Now let us come for the next question, next problem, that is problem number 6. When an electric current of 0.4825 ampere was passed through metallic wire, calculate the number of electron passing per second through the point on the wire. आमे 0.4825 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा गोटे मेटालिक वायर रे से कुछ पर सेकेंड रे सेटी केतटी इलेक्ट्रॉन वायर दे पास हो. आई देला t1 सेकेंड देइछि. आमे प्रथमे q काढी दबा, q काढी देला परे आमे इलेक्ट्रॉन कथा डिस्कशन करिबा. सो लेट अस कम फॉर द गिवन डाटा. गिवन I is equal to 0.4825 ampere, t is equal to 1 second. From the value of I and t, calculate q. Q is equal to I into t, and we will get 0.4825 coulomb. Number of electron passing through a point on the wire for passing 96,500 coulomb. 46,500 coulomb देले हमर केतरा इलेक्ट्रॉन पास हो 6.023 10 to the 23. एबे हमें कैलकुलेशन करिबा 0.4825 coulombs रे केते हो. So number of electron passing through a point on wire on 0.4825 coulombs is 6.02 into 10 to the 23 into 4825 0.4825 by 96,500. पिला माने जदि तुम एटी 0.62 भी नबो मोल कर आቮगाड्रो नंबर पाखरे आंसर हबो. जस्ट टिके वेरी करिव आंसर. Answer about 3.0115 into 10 to the power 18. Hence, the number of electron passing per second through a point on wire is found to be 3.0115 into 10 to the power 18. Now, let us come for the next problem, problem number 7. How much electricity in ampere is required to liberate oxygen gas at the rate of 1 ml per second? आमको से कहूचे जे केते इलेक्ट्रिसिटी दरकार 1 ml पर सेकेंड रे पास करिबा. आगे हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेशन कर देबा. इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेशन कर सला पर तार मोलिकुलर मास हला 32 ग्राम. 32 ग्राम रो वॉल्यूम होची 22.4 लीटर बा 22,400 ml. सो इक्विवेलेंट मास जति की बाहरिबो सेतिकर वॉल्यूम कैलकुलेशन कर देबा. आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. सो एटी सॉल्यूशन ले प्रथम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेशन करिबा.
atomic mass by valency 16 by 2 is equal to 8. 32 gram of oxygen means molecular mass of oxygen को हमें नीचे ग्राम molecular mass तार वॉल्यूम है 22.4 लीटर that is 22,400 ml at NTP. So 1 gram of oxygen is equal to वॉल्यूम आम कैलकुलेशन करवा 8 ग्राम रे केते कैलकुलेशन करवा इट इज फाउंड टू बी 5,600 ml at NTP. Let x ampere of electricity is required at time t is equal to 1 second. Then q is equal to it, that is x coulomb. 96 ml of gas liberates when electricity 1 farad, that is 6,500 coulomb. So 1 ml of the gas is liberated 96,500 by 5,600, that is 17.2 coulomb of electricity required. So x is equal to quantity of electricity by t, as t is equal to 1 second, so x is equal to 17.2 ampere. Thus 17.2 ampere of electricity is required to liberate oxygen gas at the rate of 1 ml per second. Let us come for the next problem. Problem number 8. How many grams of chlorine will be produced by the electrolysis of molten sodium chloride with a current of 5.5 amperes for 25 minutes? ये क्वेश्चन टी एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2004 रे आसी थिला. एज पर द क्वेश्चन, how many grams of chlorine will be produced by the electrolysis of molten sodium chloride when a current of 5.5 ampere for 25 minutes? I देला, T देला, W मागिचे, आमको इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन कैलकुलेशन करिया को पड़िबो. सेइथिरु इसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन कैलकुलेशन करि देले आई अच्छी टी अच्छी आम जेड कैलकुलेशन कर सारी आमको डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी फॉर्मुला रे फाड़े फास्ट लॉ जाई आंसर टी मिल. लेट अस कम फॉर द सॉल्यूशन. हियर आई इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर, टी इज इक्वल टू 25 मिनट्स, कन्वर्टेड इट इनटू सेकेंड, इट विल कन्वर्टेड टू 1500 सेकेंड. Equivalent mass of chlorine is equal to 35.5 by 1, that is equal to 35.5. Equivalent mass पाइला पर Z कैलकुलेशन करिवा. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन Z is equal to 35.5 by 96,500 because Z is equal to E by 12,500. Now weight of chlorine liberated is equal to ZIT. Putting the value of Z, I and T, we can calculate it to be 3.036 gram. Thus, by passing 5.5 ampere of electricity for 25 minutes, 3.036 gram of chlorine will be liberated from sodium chloride solution. Let us come for the next problem. Problem number 9. 0.2964 gram of copper was deposited on passing a current of 0.5 ampere for 30 minutes through copper sulfate solution. What is the atomic mass of copper? ये क्वेश्चन टी एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जाम 2007 रे आसी थिला. आमको कौन देला? W देइछि 0.2964 ग्राम, I देइछि 0.5 एम्पियर, टाइम देइछि 30 मिनिट्स, आम ताको सेकेंड कर दे पारिबा. आमको मागिछि एटॉमिक मास केते हम न मागितरे में हमको जेड काढिया पड़िबो. जेड रु ई को जाई ई रु आमे ए कैलकुलेशन करि पारिबा. सो लेट अस कम फॉर द सॉल्यूशन. हियर I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 30 मिनिट्स ये देइथिला. टाइम को सेकेंड को कन्वर्ट कर देबा. अगेन W इज इक्वल टू देइथिला 0.2964 ग्राम, मागितला एटॉमिक मास ऑफ कॉपर केते. देखो आमे जानि जो WCU इज इक्वल टू ZCuIT. Putting the value of WCU, I and T, the value of ZCU can be calculated.
जेडसीयू पाई सारा आम जानी जेडसीयू इज इक्वल टू ईसीयू बाई 96,500. Putting this value, we can also calculate the equivalent mass of copper. Again, ECU is equal to ACU by V. In copper sulfate solution, valence of copper is 2. So ACU by 2 is equal to आम जी ECU काढ़ी पाइबा. एवं कथा उठुची जे ACU इज इक्वल टू केते ना जी कैलकुलेशन करूँ ACU by 2 थिला 2 टाक मल्टीप्लाई करदेबू से कुलम सहित तेल आमको मिल 31.7485 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 63.497 ग्राम. Thus, the atomic mass of copper is found to be 63.497 gram. Now, let us come for the next problem. Problem number 10. What amount of copper will be deposited whenever a current which can deposit 10.8 gram of silver from silver nitrate solution is passed through copper sulfate solution? What amount of copper will be deposited when a current which can deposit 10 gram of silver from silver nitrate? सिल्वर नाइट्रेट रु 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर दब सेतिकी करेंट केते अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट करिवो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ए क्वेश्चन टी 2008 HSC एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2008 रे आसीथिला. एबे यार सॉल्यूशन विषय रे हमें डिस्कशन करिबा. आमको WAG देला WCU मांगिला. WAG केते देला WAG 10.8 WCU मांगिला आमको आगे WAG को नहीं कैलकुलेशन करिया को पड़िबो जे WAG रो EAG केते ना 108 बैलेंस ऑफ सिल्वर केते ना 1. सो आगे कैलकुलेशन करिया पड़ियो इक्विवेलेंट मास ऑफ AG केते ना AG बाय VAG दैट इज इक्वल टू 108. अगेन बर्तमान हमको तो EAG मिली गला. ECU कैलकुलेशन करियबो सेमिति कहते ना ACU by VCU 63.5 डिवाइड बाय 2 31.75. ताले आम को EAG अच्छी ECU अच्छी WAG अच्छी WCU काढ़ा पड़ो. सो फ्रॉम Faraday सेकेंड लॉ वी नो दैट WCU by WAG is equal to ECU by EAG. आमको कौन पुटिंग द वैल्यूज आम पाखे WCU मांगी कि WAG अच्छी ECU अच्छी EAG अच्छी. Put these values. Then finally we can calculate the WCU as 3.175 gram. So 3.175 gram of copper will be deposited from copper sulfate solution. Let us come for the next problem, that is problem number 11. When a current of 1.5 ampere strength is passed through a solution of salt metal. Atomic mass is 112 for 15 minutes. 0.783 gram of metal is deposited. Find out the valency of the metal. आमको कौन कौन डाटा देला I देला 1.5 एम्पियर. टाइम देला आमको 15 मिनिट आम ताको कन्वर्ट कर दे पारिबा सेकेंड को. वेट ऑफ मेटल WM देला. एटॉमिक मास ऑफ द मेटल AM देला. आमको वैलेंसी ऑफ द मेटल पचारला. सो Faraday फर्स्ट लॉ अनुसार आम प्रॉब्लम टी सॉल्व कर पारिबा. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉल्यूशन लेट अस गिव व्हाट आर गिवन. I देला 1.5 एम्पियर. टाइम देला 15 मिनिट ताको सेकेंड को कन्वर्ट कर देलु. WM देइछि 0.783 ग्राम. एटॉमिक मास देइछि 112. वैलेंसी ऑफ द मेटल पचारिछि. वी नो दैट WM इज इक्वल टू ZMIT. सो WM आमे बाई एबे जे आमे करिया WM बाई ZM टा केते हेबो ना ZM इज इक्वल टू WM बाई IT. WM रो वैल्यू तिला I रो तिला T रो तिला वैल्यू पुट कर देले ZM बाहर जिवो. Again ZM is nothing but EM by 46,500 is equal to सेतिकी. So EM बाहर जे परिबो
EM is equal to प्रकृति रे किए ना AM by BA. So ACU एटी हम मेटल डाउची कपर ACU by valency of CU एटा VM लिखिया तो कहने VCU लिखिया जाए परिबो is equal to केते ना 0.00058 into 96,500. Thus valency of the metal is equal to 112 divided by 55.97 that is equal to 2.001. पिलाने मन रख valency के fraction है पारे नहीं it can never be zero it can never be a fraction. So it should be rounded up to nearest whole number, that is 2. So you have to write the answer that the valency of the metal is found to be 2. Now let us come for the next problem, that is problem number 12. When a current of 24 ampere strength is passed through silver nitrate solution for 10 minutes. 16 gram of silver is deposited. Find out the electrochemical equivalent of silver. ये प्रॉब्लम टी HSC 2012 रे आसीथिला एटी हमकु डाटा कोन कोन देला आई देला टी देला W देइछि Z मागिछि. So Z is equal to W by IT. Z we know that W is equal to Z IT. Z is equal to W by IT. It is direct problem टी. So first problem जाई हमको सॉल्व करिया पड़िबो. Now come for the solution. Here I is equal to 24 ampere, T is equal to 10 minutes, that is 600 second. WAG is equal to 16 gram. ZAG is equal to dash. We know that WAG is equal to ZAG IT. So ZAG is equal to WAG by IT. So WAG थिला 16 gram. हमें पुट कर दबा. So ZAG is equal to WAG by IT. WAG 16 थिला. I 24 ampere थिला. T 600 second थिला. By putting these values, we can calculate the ZAG as 0.0011. So एटी प्रॉब्लम टी हमको कौन कही थिला जे find the electrochemical equivalent of silver. So the electrochemical equivalent of silver is found to be 0.0011. Now एबे तुमको ए वीडियो लास्ट किसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखा जाइछि. आमे शीर्ष प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर नजर पकेबा. एटी समुदाय 9टी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है. आमे गोटे गोटे प्रॉब्लम को एबे नजर पकेबा. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1. Calculate the electrochemical equivalent of zinc given that atomic mass of zinc is equal to 65. Very easy question. आमको Z मागा है A दिया है आमको वैलेंसी ऑफ जिंक जना. सो ई काढ़ा तापर आम Z कैलकुलेशन करवा. यू कैन इजीली सॉल्व इट. प्रॉब्लम नंबर 2. Calculate the quantity of electricity in coulomb required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus. आम MnO4 minus रे manganese oxidation number कैलकुलेशन करवा. सेटा में जानीपर केते मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96,500 कुलुम. जी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहरिला तापाई केते कुलुम. इट कैन बी इजीली सॉल्व. नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3. 0.2015 gram of copper was deposited by a current of 0.25 ampere in 45 minutes. What is the electrochemical equivalent of copper? हमको W देइछि, I देइछि, T देइछि, Z मागिछि. डायरेक्टली इट कैन बी कैलकुलेटेड. Z इज इक्वल W by IT. कि तो पिला मन रखिबो. टाइम मस्ट बी कन्वर्टेड टू सेकेंड, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4. When a current of 0.15 ampere string is passed through a salt of metal for 150 minutes, 0.783 gram of metal was deposited. Find the valency of the metal if its atomic weight is 112. I देला, T देला मतलब सेकेंड को कन्वर्ट करिबा. W देइछि,
आम इजिली जेड पाई डब्ल्यू बाई आई टी बट आमको जेड मागी ना इ काढ़ा जेड रु जेड इंटू 96,500 कर इ पाई इजिकल टू ए बाई भी ए देची आम भेरी इजिली भी कैलकुलेशन करिपरिबा। एबे नजर पकेबा नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 20 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 60 मिनट एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड आमको डाटा कौन देला आई देला टी को सेकेंड को कन्वर्ट करवा एटॉमिक वेट देछि अर्थात जेड देई नाही आम एटॉमिक वेट रु ई कैलकुलेशन करवा कॉपर वैलेंसी 2 इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो ई कैलकुलेशन कर सारा जेड कैलकुलेशन करवा ई बाई 96,500 करी जेड कैलकुलेशन हो सारा आम इजिली कैलकुलेशन करिपरिबा डब्ल्यू इजिकल टू जेड आई टी फॉर्मूला यूज करी। एबे नजर पकेबा प्रॉब्लम नंबर 6 ए करेंट of 2.5 ampere passes through a solution of zinc sulfate for 30 minutes and deposit 1.52 gram of zinc metal at cathode. What is the equivalent mass of zinc metal? प्रॉब्लम कौन कहला आमको आई देला टी देला टाइम टी मिनिट अच्छे आम सेकेंड करने को पड़ो डब्ल्यू देची इक्विवेलेंट मास मागिची आगे आम जेड कैलकुलेशन करवा जेड इज टू डब्ल्यू बाई आई टी फॉर्मूला यूज करी जेड कैलकुलेशन कर सारापर जिंक सल्फेट जिंक वैलेंसी 2 वी कैन इजिली कैलकुलेट सॉरी इक्विवेलेंट मास मागी इक्विवेलेंट मास इज टू जेड इंटू 96,500 सो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इज टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक आम जो कैलकुलेशन कर सारी 96,500 मल्टीप्लाई करदे आमको ई मिल जाए। एबे नजर पकेबा नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 व्हेन एन इलेक्ट्रिक current was passed simultaneously through acidulated water and copper sulfate solution 203 gram of hydrogen is liberated at NTP and 0.578 gram of copper was deposited. Calculate the equivalent mass of copper. Given equivalent mass of hydrogen is 1 कौन कौन डाटा आमको देला सी आमको इलेक्ट्रिक करेंट साइमल्टेनियसली पास करिचे एसिडेटेड वाटर कॉपर सल्फेट रे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी देइची वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लु आमे वेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेशन करि परिबा कारण स्टैंडर्ड वैल्यू आमे जानिछु 1 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी वे 0.000089 ग्राम सेइथरो आमे डब्ल्यूएच पाई परिबु डब्ल्यूएच इनडायरेक्टली पाई गला परे डब्ल्यूसी हम पाखरे अछि इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अछि आम इजिली इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन पाई जाई पारिबु। सो व्हेन ए करेंट वाज पास साइमल्टेनियसली थ्रू एसिडेटेड वाटर एंड कॉपर सल्फेट आम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर को कैलकुलेशन करि पारिबु जेतु आम पाखरे इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अछि। नाउ लेट अस कम फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8 कैलकुलेट the volume at NTP of the hydrogen which will be liberated when a current of 0.75 ampere is passed for 45 minutes through a metallic salt solution and the cathode was found to gain weight by 0.6662 gram. आमको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस पचारि केते लिबरेट हम जिते बड़े 0.75 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आई देची टी देची आम मेटालिक कैथोड पाखरे डब्ल्यू मध्य देची सो आम तो डब्ल्यू कैलकुलेट प्रथम आम कैलकुलेशन करूँ केते वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हम तापर ताको वॉल्यूम को कन्वर्ट करिया को पड़िबो कारण आम वॉल्यूम आउ वेट गोटे स्टैंडर्ड रिलेशन जानिछु वेट ऑफ 1 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी is equal to 0.000089 gram or by round up we can say 0.00009 gram. एबे नजर पकेबा नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9 the same current was passed successively
through the solution of zinc sulfate and nickel sulfate. The weight of nickel, zinc and nickel deposited at a certain time was found to 0.57 gram and 0.477 gram respectively. Calculate the equivalent mass of nickel if the equivalent mass of zinc is 32.7. आमको WZN WNI देइछि आमको EZN देइछि ENI मागिछि फारडे सेकेंड लॉ डायरेक्ट प्रॉब्लम W1/W2 is equal to E1/E2 पके देले we can easily solve it. Thanks for watching Bhopal Search Career Point. Please like and share this video. Don't forget to subscribe my channel if you are watching it for the first time.